Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. January 26, the day the Indian Republic felicitates its soldiers and martyrs. It's also the day India rewards its children who have shown exemplary courage. These are the National Bravery Award winners. 25 children have been selected for the awards this year, including 2 posthumously. But what happens to these kids after the show is over and life begins again? What becomes of them? I was curious to know. Out of all the stories of courage over the past 10 years, the stories of 2 women in particular caught my attention. My search took me not very far from home. Wadia Hospital in Mumbai, to be exact. मुझे ये अवार्ड 2007 में मिला था वीर बापू गाइधनी फ्लड में बच्चों को बचाने के लिए. In the year 2005, Mumbai was hit with the worst flood in decades. Asma helped save the lives of 40 children in her orphanage from drowning. हम 4 से 5 जन थे, स्कूल नहीं गए, हम वहाँ पे कैंपस में खेल रहे थे. 4 साढ़े 4 के बीच में बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो उन बच्चों को फिर मैंने थोड़े थोड़े को लेके गई ऊपर. वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ पे भी पानी आने लगा और जो भी बच्चों के खेलने का चीज़ें हैं, बैग्स है, सब ऊपर आने लगे. तो जिसकी वजह से बच्चे और डर गए, सब चिल्लाने लगे, दीदी बचाओ, दीदी बचाओ. तो वहाँ पे मैंने बच्चों को लिया, दोनों कंधे पे उठा के और वहाँ पे लेके जाके रखने लगी. देखते ही देखते पानी पूरा काला हो गया और काले पानी में सांप, कुत्ता, सब लोग मतलब ऐसे चल रहे थे ना, पूरे आंख पे रोंगटे खड़े हो रहे थे. स्टार्टिंग में तो पैर तक ही था पानी, बट बात करते करते, बच्चों को शिफ्ट करते करते वो कब मेरे कंधे तक आ गया समझ में ही नहीं आया. 4 साढ़े 4 बजे शिफ्टिंग चालू किया था, रात के 9 बजे तक शिफ्टिंग कर रहे थे हम. As I spent more time with her, I found out Asma had lived in orphanages. But she wasn't an orphan. मेरी मम्मी ने रीमैरिड किया, उसके बाद वो लोग मुझे रखना नहीं चाहते थे, मना कर दिया था मुझे. तो एक दीदी थी जो मिली थी, तो दीदी बोली तू संस्था में रहेगी क्या, तो उसने मुझे CWC के यहाँ पे लेके गई. उसके बाद मैं वहाँ पे मेरा 8th कंप्लीट किया. मैंने वहाँ पे 10th तक उम्मीद था कि आएंगे लेके जाएंगे. बस मेरी एक स्टेप सिस्टर है, वो होने के बाद वो नहीं आया मिलने के लिए. Today, Asma is a nurse, and the zeal for helping others still burns strong within her. एज अ स्टाफ नर्स मैं वाडिया हॉस्पिटल में काम करती हूँ. अभी भी मेरे जो NIC में काम करती हूँ, अभी भी मैं बच्चों को कभी भी कुछ होता है, हम जी जान लगा के भागते हैं. देखते नहीं है कोई है नहीं है, तो उनको देख नहीं सकते हम जाते हुए. मुझे मोस्ट प्रॉब्ली स्नेहा सदर ने बेसिकली ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मेरा 12th वहाँ पे हुआ है. मेरा नर्सिंग भी उन्होंने दिया है, लाइक 3.5 years का. तो आपको अवार्ड मिलने के बाद कोई रिजर्वेशन या कोई स्कॉलरशिप मिली गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती है अवार्ड विनर्स को? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मतलब ऐसा कोई हेल्प या तो कुछ रिजर्वेशन मिलता है इस बारे. Asma isn't aware that bravery award winners like her are eligible to scholarships from the government. But without any financial assistance from the state, she has carved this path all by herself.
My next story took me to a small village called Shahpur, 4 hours ahead of Mumbai, where a 15-year-old tribal girl saved her sister from a panther. लाकडा आणायला गेलोत. माझ्यासोबत माझी मोठी बहीण शकुंतला होती. पाठीमागशी बहिणीवर वाघानं हल्ला केला. तिचा पाठीचा लचका तोडला. मांडी आणि पायाचा लचका काढला. बहीण जखमी झाली. वाघाला दगड लागली. मग वाघ पळून गेला. तेव्हा काही लोक लाकडा गोळा करीत होती, पण ती पण धावत आली. The tale of her bravery has found its way into the textbooks of the local schools. Today, Halli is 20 years old and a mother of 2 kids. This former Bravery Award winner today earns 100 rupees a day, working in a brick kiln. मध्ये किती वाजता जाते तू कामाला? सकाळी जाते. सकाळी जाते आणि संध्याकाळी किती वाजता येते? संध्याकाळचे 6 वाजता. मी ना माझा नवरा 300 रुपयात काम करतो. दोघं मिळून. When we sat down for lunch, I noticed that there was a bowl of vegetables that was quietly borrowed from a neighbor and shared in very small quantities. That's when I realized that they had only cooked rice for themselves. नेतात तसे दुनियाला नेतात ते, पण फरकच येत नाही. ऑडमेट तर करत नाही सरकारी मध्ये. तुमचं वय किती असेल दादा? He was around my age and had already made several rounds to the hospital. I promised to help them out with a good doctor, if only they could come up till Mumbai, because that's all the help that I could afford to extend. The tribal girl who was brought all the way from the village to the capital to be felicitated by the head of the state, today is struggling to make ends meet. These women had received awards for their acts of bravery years ago. Their bravery isn't something that needs a medal. It's something that their lives and of those around them are dependent on.